आज मैं ऐसी 7 स्किल्स के बारे में शेयर करना चाहता हूँ जो मैं खुद के लिए सीख रहा हूँ 2026 में अपना एक बेटर वर्जन बनने के लिए एंड टू अचीव द मोस्ट आउट ऑफ माई plans that I had for myself and to make sure that I work towards my goal and achieve them accordingly. So the very first skill that I'm learning is quantitative aptitude. I believe learning quantitative aptitude will not only help you measure what matters, but also help you have confidence over your emotions and would not let you be diverted or be lost while working towards your journey. बिकॉज अक्सर शायद हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जब भी अपने लिए कोई एक नया गोल या एक नया टारगेट पिकअप करते हैं, हम उसके बारे में इतने सारे सोर्सेस से या इतने सारे नॉलेज पॉइंट्स से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं एंड एक्चुअल प्रैक्टिस करने के पहले उसके बारे में सब कुछ एक साथ ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, जिससे शायद हम जहां तक पहुंचना चाहिए उसके साथ 20% ही काम कर पाते हैं। एंड मेरा ये बिलीफ है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगर हम सीख के उसको लर्न करके उसको अपने लाइफ में एप्लीकेशन की तरह यूज करें तो ये एक लेवरेज का काम कर सकता है हमें एक बेटर वर्जन अपना अचीव करने के लिए। The second goals that I'm learning for myself is data interpretation and logical reasoning. Again, I believe कि learning data interpretation and logical reasoning would help me diversify my approaches and broaden my scope uh, towards a point of concept that I want to look at and how I approach and how I carve my way over that goal. And logical reasoning and data interpretation would not only broaden the vision and would help, but would also help me focus on a uh, streamlined format so that I can work towards my goal and be a better version of myself. The third goal that I'm learning for myself right now is storytelling and communication. I believe that to make understand and to be understood is not just only a privilege but is also a leverage in today's times, because being understood and to be able to understand somebody, something or anything in today's times जहाँ पे the most scarce resource is somebody's attention, and उसके लिए कम्युनिकेशन आप जो करते हो किसी पर्सन से, किसी ऑडियंस से या किसी के थ्रू, वो मैटर करता है और अपनी बातों को समझाने के लिए स्टोरी टेलिंग की स्किल मैटर करती है। सो दिस इज द थर्ड स्किल दैट आई एम लर्निंग राइट नाउ। द फोर्थ skill that I'm learning right now is data analysis and Excel. I believe data is the most important uh, aspect one can have in the life right now in the 20th century, and Excel is not just a electronic software but is also a tool that could help you plan your next step that you can have for yourself in all aspects of your life, whether it's planning for a new purchase, planning for your retirement life, or planning any big purchase or any expense of such sort. Excel would not just help have you have a uh, all-round viewpoint of that, but would also help you simplify your calculations through that. So the Excel is a very important skill to have right now, and I am focusing myself to build upon that. The fifth skill that I'm learning for myself is product management, and it is because it centers to my why that I have for myself, that is celebrate work and celebrate you. And product management is a career that I sought out to for myself because I find कि मैं उस इंटरसेक्शन पे एक इकिगाई में फॉल करता हूँ, जहाँ मैं एक प्रोडक्ट को अच्छे से मैनेज करके उसको इंजीनियरिंग टीम के थ्रू, मार्केटिंग टीम के थ्रू, सेल्स टीम के थ्रू एंड और भी सारे एस्पेक्ट के थ्रू कनेक्ट करके उस प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को उसके स्टार्ट से एंड तक पहुंचाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। एंड thus this journey and the process of this journey can be used by me
to earn my livelihood, and thus product management is the fifth skill that I'm learning for myself right now. The sixth skill that I'm learning for myself right now is AI and Python. And I believe in today's time, which is not only promoting the uh, the यूज ऑफ एआई, बट जहां पे आप एआई को यूज करके अपने हर अगले मूव को और एफिशिएंट बना सकते हो. एंड इसलिए आई ought to learn Python and AI to improve my productivity and to grow myself better. And the last and the most important seventh skill that I'm learning for myself is reading and patient. एंड आई बिलीव कि बहुत ज्यादा समझदार लोग हैं मुझसे इस दुनिया में, एंड उनसे मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ उनके काम के थ्रू. एंड उनकी लिखी हुई किताबों के थ्रू मैं खुद को और बेटर बनाने के लिए सीखना चाह रहा हूँ. एंड दस I have chosen reading and patient as being patient as a skill to have in me to upskill myself uh, and grow, to build a leverage of out of me and to help me advance in my career. And I believe choices in life should be made from a point of awareness and not ignorance, and therefore knowledge becomes the real leverage in all of these aspects of life. And thus I ought to, and I am here to improve myself every day, and through the journey of me uh, accounting for my growth on my channel, I want you all to grow along with me, and whatever you resonate with my journey, apply them into your own, and be a better version of your own self. वक्त लगता है वक्त बदलने में, और मैं अपना ले रहा हूँ. Until next time, this is me, Prakhar, signing off.